Hello students, I am Akhilesh Kumar Shrivastava from ABS Engineering College, Ghaziabad. In the series of the data structure lectures, today we will discuss about the single source shortest path. In the previous lecture, I have discussed about the all pair shortest path. In today's lecture, we will discuss another variant of the shortest path, which is the single source shortest path. So, the outline of the today's lecture would be that we will discuss about the concept of paths, concept of shortest path. Then we will discuss about types of the shortest path, then single source shortest path, and finally we will discuss about the applications of the shortest path. So, now let us start with what is the shortest path. For example, you have been given a graph in which there is no weight assigned on the edges. For example, this graph. अगर आपको shortest path find करना है किसी pair of station के बीच में, तो only method that we have is finding this with the help of the BFS algorithm. Now, breadth-first search algorithm will find out how many edges are there to cover between a pair of station whatever you select. For example, if I have B and E, then the shortest distance between B and E will be the minimum number of edges required to reach from B to E. But there is a limitation that if you have to find out the shortest path between B and E, you will have to compute the BFS considering that vertex number B is a source. In case you have to find out the shortest path between A and D, in that case you need to select A as a source and then you will have to execute the BFS. So, here in this graph no weights have been assigned on the edges. We are considering that the cost of the edge is 1. So, for any path, for example, B to E, to find out the shortest path between B to E, the path with us is B to A to C to E. Total number of edges involved here are 3 and the total number of edges is telling you the shortest path. Now, another variant of this would be that the weights are assigned between the pair of the station. So, on the right hand side you have a graph wherein the weights have been assigned on the edges of the graph. So, if we have the weights already given on the edges, then let us say we have to find out the shortest path between A and let us say D, or let us say we have to find out the shortest path between B and D. So, if you have to find out the shortest path between B to D, you can see that the direct cost between B to D is 450. But in case you go from B to A and then you go to A to D, the cost of the path would be 210 plus 190, that is 400. So, between these two 400 is minimum. So, we will pick this path. So, अगर आपके पास ग्राफ के edges पे weights assigned है, so the BFS will not work. You will have to employ some other mechanism in finding out the shortest path between the pair of the station. So, for finding out the shortest path between pair of the station where the weights are assigned, you may either use the Warshall's algorithm in case you have to find out the shortest path between every pair of the station, or you can employ the Dijkstra's algorithm to find out the single source shortest path. The source is specified and you have to find out the shortest path between every other pair of the vertex, or you can apply the Bellman-Ford algorithm wherein the negative weight cycles are existing in the graph. Now, let us say you have to book a cab. So, for booking a cab you specify your source and you specify your destination. In case you have to find out the shortest path between this station and this station, the entire graph or entire map of the city should have been represented using the graph. So, if that is represented using the graph, the vertices would be representing the stations or the cities, the edges would be the road segment and the length of the road segment is represented by the edge weights. So,
to find out the shortest path, you must have a graph, and in that graph you must have the vertices. Those vertices are actually the stations or the cities or the different locations in the city, and the edges would be representing the road segment, and the length of those road segments will be the edge weights. Now, let us say we have to find out the shortest path. So, for finding out the shortest path, we must have an idea about the path first. So, what is the path? If you have I and j vertices and you have to find out, you have to go from I to j. So, for going from I to j, you may visit to various stations in between. You may visit to 0 vertex, 1 vertex and 3 vertex, and then finally you can reach to the j vertex. So, the sequence of vertices is telling you the path, and the weight of the path would be, you sum the edge cost of all the edges, that will actually be telling you the weight of this path. For example, if we have picked this V0, Vi, V0, V1, V3 and Vj, then the cost of the total path would be cost of the edge Vi, V0, cost of the edge V0, V1, cost of the edge V1 and V3, and then finally the cost of the edge V3 and Vj. You sum all these and this will actually be the answer. What will be the shortest path among these? So, you have various paths possible between the pair of destination. This is one of the paths possible between Vi to Vj. There may be other path also possible. So, there are several paths possible between the pair of destination. You select the minimum out of that, and that will actually be the shortest path. So, distance uv is telling you the shortest path between the pair of destination. So, what is that? That is Wp if there exists a path from u to v. If the path does not exist, that will be infinite. In case the two vertices are not approachable, they are not, there is no possible path between them, that entry will be shown by the infinitive. Okay. Now, what are the variants of the shortest path? The first one is single source shortest path. कौन से variants possible हैं? पहला है single source shortest path. Let's say my college is organizing a conference. There are possibility of various people coming from the different universities. The college will pay travelling allowance to all the participants which are taking part in the conference. But college has decided a mechanism, because every participant may be coming through their own mechanism. Someone may be coming through the first AC class of the train, some may be coming by the Rajdhani Express, some may be coming by the normal express trains, some may be coming by the flight, okay? Or some may be doing the break journey, they are coming from one station to the other through the flight, and then from there they are coming to the train in some class. But the college has decided that college will be paying only a third AC fare of the shortest route possible. So, college should find out the shortest path from the college to other cities. So, for this the source is specified, the source is my college, and there are many destinations. So, for all those destinations I may need to find out the shortest path. So, single source shortest path is like that. Now, single destination shortest path, let us say that there are various sources, but the destination is common. To find out the solution of such a problem, you need to reverse the edges of the graph, and then you have to find out the single source shortest path. In that case, the D becomes the source, and these becomes these S1, S2, S3, S4 become the destinations. Now, there may be a situation wherein single pair shortest path have to be found. For example, booking a cab. So, in that you specify source, you specify destination. So, there is a single source and there is a single destination. If you have to find out the shortest path in such a case, then you will apply a single source shortest path only, because the source is specified. You execute the single source shortest path and then you will have the answer. And finally, the all pair shortest path, wherein you have to find out the shortest path between every possible pair in the vertex. Let us say you have a graph like this, A, B, C and D. In case you have to find out the shortest path between every pair of the vertex, then the pairs possible are AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB and DC. So, there are various possible paths, there are various possible pairs possible.
you have to find out the shortest path between every possible pair in the graph. So, for that you will apply the all pair shortest path. Okay. So, for finding out the single source shortest path where there are no negative weight edges, you apply the Dijkstra's algorithm. And for finding out the all pair shortest path, you apply the Warshall algorithm. To be very specific, it is Floyd-Warshall algorithm. In case the negative weight cycles are existing and there is negative weight edges are existing and there is a negative weight cycle as well, those problems can be solved by Bellman-Ford algorithm. So, today we will discuss about only the Dijkstra's algorithm. For finding out the solution to the single source shortest path, we will be using the Dijkstra's algorithm. So, now let us first understand that how do we find out the shortest path. Before that, let us say how the algorithm progresses, how does the algorithm Dijkstra's algorithm progresses. So, we have two entries, we have one is the dv entry which is telling you the distance between distance of the vertex v from source. Okay. Source has been specified, let us say S is the source और कोई किसी भी vertex के लिए अगर हम ये निकालें, let us say d1. So, what is this? This is telling you the minimum distance of vertex number 1 from source. Okay. Similarly, if I say d6, so this is telling you minimum distance of vertex number 6 from source. In case there is a path existing, the d1, d6, all these things will be containing a positive values. Otherwise, in case the path is not existing, these values will be infinite. Infinite means the vertices are not approachable. And then the pi v is representing the predecessors. Pi v will be representing the predecessors. Predecessor means, let us say I have to go from I to x, S to x here in this graph. In case I am going from S to x, for vertex number x, the predecessor is t. It means before going to x, I would have visited t, and then the predecessor for t is s, because before going to t, I actually had s first. So, I have gone from s to t, that is why the vertex t has a predecessor s. If the predecessor is nil, it means that I do not have any path to that vertex. Okay. Now, we have to find out the shortest path. You must remember that whenever we are finding out the shortest path tree is or shortest path is not unique. There may be multiple shortest path possible. For example, in the given graph, if you have to go from s to x, the one path is possible, s to t and then t to x, it has a cost 9. Okay. If you go from s to y and then y to x, then also the cost is 9. So, there are two paths possible. Out of those you may pick any one, but the Dijkstra's algorithm is not guaranteeing you to give the unique path. Now, about the relaxation. In the Dijkstra's algorithm, we will be using the relaxation concept. What is the concept of the relaxation? Let us say S source is defined, this is the S source, and this u and v are the two vertices. The edge cost between u and v is 2, and earlier we have the distance of u is 5 and the distance of v is 9. Now, in case you go from u to v, the cost of the edge is 2. So, the total cost should be 5 plus 2, that is 7, and 7 is smaller than 9. So, we should pick this 7 because we are finding out the shortest path. So, the relaxation algorithm just checks that if dv means the distance, let us say this is v vertex. So, if dv is greater than du means distance of this vertex from source plus the cost of the edge wuv, then it will update the distance of v with du plus wuv. So, now you have updated vertex distance of v as 7. There may be certain situations wherein the updations are not required or updations are not possible. For example, distance of u from source is 5, distance of v from source is 6, and the cost of the edge is 2. So, if you sum 5 and 2 for reaching through u to v, the cost becomes 7, but the cost is already 6. So, we do not need this updation. So, updation will be done only in the case where we are finding out a better solution or we are finding out the minimum value of the distance. Okay. So, after the relaxation, what happens?
the distance of V will be less than or equal to du plus wuv. Obviously, if we are updating the distance, that distance will either be less than the du plus wuv, or if we have updated, so that will be equals to du plus wuv. Now, how does the Dijkstra's algorithm proceeds? I already have told you that there is no negative weight edges, and we maintain the two sets. One is these vertices, and PQ is the priority queue, because we will be executing this algorithm with the help of the priority queue. Now, let us say this is the graph, and in this graph we have to find out the shortest path. For finding out the shortest path, what we have done, we have set the distance of source as 0. Inside the circle, we have the circles which are representing the vertices. So, inside the circle we are putting out the distance, putting up the distances. So, the distance of source to source is 0, and all other distances have been set to infinite. We have considered that initially all the vertices are unapproachable from the source. So, that is why we have set infinite at all the vertices, and inside the vertices I will be putting up the minimum distances. Now, out of all these things, means 0, infinite, infinite, infinite and infinite distances, 0 is minimum. So, you just pick this 0. 0 is for source S. So, from source S there are two possible paths. One is from S to T. Earlier we had S to Ts, distance of T was infinite. Now, since there is an edge from S to T, distance is 10. So, 0 plus 10 is 10, which is less than infinite. So, we have set the distance of T as 10. Now, from S I can go to Y also. There is an edge that has a cost 5. Earlier we had the distance of Y as infinite. Now, if we consider this edge, we have the 5 cost of this edge. So, 0 plus 5 makes it 5. So, 5 would be the distance of Y from the source. So, we are making the updations. Now, out of these available vertices, means S, T and Y. S we already have considered once. Now, we have T and Y. What is the smallest one among T and Y? Or in fact, you consider every one, then 10, infinite, infinite and infinite, sorry 5. The smallest one is this 5. So, इस 5 वाला वर्टेक्स जो कि y है या 5 डिस्टेंस वाला वर्टेक्स जो y है, इससे जाने वाले सारे पाथ्स को आप एक्सप्लोर करो. फर्स्ट पाथ इज दिस वन, y to t. Now, earlier the distance of t was 10. Earlier the distance of t was 10. Now, if we go from y to t, so that will be equals to distance of y plus the h cost, that is 3. So, this will be 8. So, among 10 and 8, 8 is smaller. So, we have updated the distance of t as 8. Now, there is another path possible from y to x. So, earlier the distance of x was infinite, unapproachable from the source. Now, if you consider the path from y to x, then the edge has a cost 9. अगर आप सोर्स से y पे पहुंचना चाहते हैं तो उसकी डिस्टेंस 5 है. सो आप अपडेट कर दीजिए 5 plus 9, 14 as a new distance of x. Now, there is another path possible from y to z. Earlier the distance of z was infinite. If you go to z via y, तो सोर्स से y तक पहुंचने की डिस्टेंस 5 है, एज की कॉस्ट 2 है, you can make it as 7. So, you can reach to this in 7 distance. Now, out of the available vertices, you already have deleted s and y, then now you have t, x and z. So, distance is 8, 14 and 7. Shortest one is the 7, means z. So, अब आप इसके थ्रू अपडेट कीजिए. 7 से जाने वाली जो एज है या जो z से जाने वाली जो एजेस हैं, उनमें एक एज है z to x. नाउ x की कॉस्ट पहले 14 थी. अगर आप वाया z जाएं तो इसकी कॉस्ट 7 जो कि z की डिस्टेंस है प्लस 6, ये 13 हो जाती है. सो यू शुड अपडेट दिस बाय 13. ओके, नाउ देयर इज आल्सो एन एज फ्रॉम z to s, बट यू विल नॉट कंसिडर दैट. यू आर नॉट कंसिडरिंग दैट बिकॉज you're not considering that edge because that vertex has already got deleted. Now, next जो vertex हमारे पास available है वो 8 और 13 कॉस्ट वाला है. आप 8 कॉस्ट वाला t सेलेक्ट कर लीजिए
और 8 कॉस्ट वाले t से अगर आप x पे जाएंगे तो 8 + 1 9 कॉस्ट लगेगी. सो आप इसको अपडेट कर दीजिए. सो दिस वी हैव द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ ऑल द वर्टिसेस नाउ. सो दिस इज द प्रोसीजर दैट वी यूज इन द Dijkstra's algorithm. So final distances we have updated as this one. The thick edges are actually representing the paths through which we are going to find out the shortest paths. Okay, so cost और travel का जो path हमारा है वो thick edges हमें बता रहे हैं. तो inside the circles we have 0, 8, 5, 7 and 9 which is the shortest distance from the source. Now इसी काम को हम table method से भी कर सकते हैं. Table method से करने के लिए हमने क्या किया कि पाई ले लिया जो कि प्रेडिसेसर रिप्रेजेंट करेगा. v वर्टेक्स d इज द डिस्टेंस. तो सबसे पहले हमने सोर्स के डिस्टेंस को 0 कर दिया, बाकी सबको इनफाइनाइट कर दिया. आफ्टर दिस वी हैव डिलीटेड द स्मॉलेस्ट वर्टेक्स हियर. ये प्रायोरिटी क्यू के साथ वर्क करेगा इसलिए स्मॉलेस्ट वाले को हम डिलीट कर देंगे. मिनिमम प्रायोरिटी क्यू है ये. सो s से जाने वाली सारी एजेस को हमने एक्सप्लोर किया. वो s से t है और s से y है. सो t की डिस्टेंस को 10 कर दीजिए, इनफाइनाइट से छोटा हो जाएगा, और y की डिस्टेंस को आप 5 कर दीजिए, बाकी हमारे अप्रोचेबल नहीं है. सो t का प्रेडिसेसर s हो जाएगा क्योंकि हम t पे s के थ्रू पहुंचे. x का भी प्रेडिसेसर s हो जाएगा. नाउ इसमें स्मॉलेस्ट जो है वो x है क्योंकि 5 डिस्टेंसेस की है, इसको डिलीट कर दीजिए. x से जाने वाले सारे पाथ्स हम देखते हैं. x से जाने वाले जो सॉरी ये x नहीं होगा, वी हैव अपडेटेड एक्चुअली y. सो y को हम डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे. सो y से जाने वाले सारे पाथ्स देखिए. y से t हम जा सकते हैं विथ 3 कॉस्ट. y की अपनी कॉस्ट 5 है, प्लस 3 8 हो गया. हमने इसको अपडेट कर दिया 10 से 8. देन y से हम z जा सकते हैं जिसकी कॉस्ट हो जाएगी 5 + 2 7. y से हम x जा सकते हैं जिसकी कॉस्ट हो जाएगी 5 + 9 14. चूंकि हमने इन वर्टिसेस को y के थ्रू एक्सप्लोर किया तो इन वर्टिसेस के प्रेडिसेसर्स y चेंज हो जाएंगे. सो ऑल दीज प्रेडिसेसर हैव बीन चेंज टू y, एंड देन वी आर डिलीटिंग दिस t बिकॉज दिस इज मिनिमम, सॉरी दिस इज z विल बी डिलीटेड, दिस इज द मिनिमम वन. सो z अगर हमने डिलीट किया तो z से जाने वाले जो पाथ हैं वो एक s की तरफ है जिसको हम अपडेट नहीं कर सकते, डिलीट हो चुका है. एंड z से x मीन्स 14 से 13 हो जाएगा क्योंकि यहाँ की कॉस्ट ऑलरेडी 7 है और 7 + 6 13 हो गया. इसका प्रेडिसेसर अपडेट हमारा हो गया z. नाउ आई कैन डिलीट दिस t बिकॉज दिस इज 8. t से जाने वाली जो एजेस हैं हम उनको एक्सप्लोर करते हैं. देयर आर एजेस टू y एंड x, बट y को कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि y ऑलरेडी डिलीट हो चुका है. सो t से x की तरफ जाने का जो कॉस्ट है वो 1 है. सो t तक पहुंचने का कॉस्ट 8 था, प्लस 1 9 हो गया. इसको हम 9 अपडेट कर देते हैं और इसका प्रेडिसेसर हमने t सेट कर दिया. सो फाइनली व्हाट वी हैव डन, वी आर कमिंग अप विद दिस मैट्रिक्स. अब हमने प्रेडिसेसर्स भी सेट कर लिया, फाइनल प्रेडिसेसर्स को. अब हमें पाथ सेट करना है. पहले तो डिस्टेंस s से y की कॉस्ट 8 हो गई, s से t की कॉस्ट 9 हुआ, s से y की कॉस्ट 5 है, s से t की जो कॉस्ट है वो 8 है, s से x की कॉस्ट 9 है, s से z की जो कॉस्ट है वो 7 है. प्रेडिसेसर्स के थ्रू हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमने पाथ कौन सा फॉलो किया. तो t का प्रेडिसेसर y है, इसका मतलब yt h को हमने फॉलो किया. सो दिस इज द yt एज, रेड कलर एज. देन हमने tx एज है क्योंकि x का प्रेडिसेसर t है, तो tx एज होगी हमारी. sy एक एज होगी, s से y एज, देन y से z एज. सो आपको पाथ अगर जाना है, अगर मान लीजिए s से आपको x जाना है तो आपने पाथ कौन सा फॉलो किया, s से y, y से t एंड देन t से x. सो दिस वे यू कैन फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन अ सोर्स एंड ऑल अदर वर्टिसेस. अब इसकी एल्गोरिथम अगर हम देखें, सो दिस इज द रिलैक्सेशन एल्गोरिथम. फर्स्ट वी शुड राइट द रिलैक्सेशन एल्गोरिथम, जिसमें अगर डिस्टेंस ऑफ v बड़ा है u की डिस्टेंस और h की कॉस्ट से, तो डिस्टेंस ऑफ v हम अपडेट कर देते हैं. चूंकि v वर्टेक्स u के थ्रू अपडेट हुआ है इसलिए इसका प्रेडिसेसर हम u सेट कर देते हैं. हमने क्या किया डाइस्ट्रस एल्गोरिथम में, सबसे पहले एक प्रायोरिटी क्यू ले लिया, उसको इनिशियलाइज कर लिया, डिस्टेंस को 0 सेट कर लिया, डिस्टेंस ऑफ सोर्स को हमने 0 सेट किया, डिस्टेंस ऑफ प्रेडिसेसर हमने सेट किया s वर्टेक्स का एज निल क्योंकि सोर्स वर्टेक्स का
कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होगा। देन हमने इस वर्टेक्स को क्यू में इंसर्ट कर दिया, एनक्यू ऑपरेशन के थ्रू इस वर्टेक्स को हमने इंसर्ट कर दिया। देन इसके बाद हमने क्या किया कि जितने भी वर्टिसेस और हैं उन सबको मान लिया कि वो सोर्स से अनअप्रोचेबल है, इसलिए उन सभी वर्टिसेस के डिस्टेंस को इनफाइनाइट सेट किया, उनके प्रेडिसेसर को निल सेट किया और उस वर्टेक्स को क्यू में इंसर्ट कर दिया। दिस इज यू। तो फॉर ऑल यू दैट इज द एलिमेंट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ग्राफ माइनस एस माइनस सोर्स, क्योंकि सोर्स को तो हमने ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया जीरो डिस्टेंस के साथ में। फिर इसके बाद जब तक हमारा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए, जब तक हमारे पास वर्टिसेस हैं प्रायोरिटी क्यू में, तब तक आपने प्रायोरिटी क्यू में से सबसे स्मॉलेस्ट वाले को डिलीट कर लिया। सो दैट वर्टेक्स इज यू। इस यू वर्टेक्स से जाने वाले जितने भी वर्टिसेस हैं या इस यू वर्टेक्स के एडजेसेंट जितने वर्टिसेस हैं उन सभी के साथ आपने रिलैक्सेशन एल्गोरिथम को कॉल करके देख लिया कि क्या हम अपडेशंस कर सकते हैं। अगर अपडेशन कर सकते हैं तो अपडेशन कर दीजिए। तो हर बार आप एक वर्टेक्स को डिलीट करेंगे, उसके थ्रू अपडेशंस करेंगे, देन अगेन आप डिलीशन करेंगे, देन अपडेशन करेंगे, और ये प्रोसेस हमारा तब तक चलेगा जब तक कि हमारे क्यू में एलिमेंट्स हैं, प्रायोरिटी क्यू में जब तक हमारे पास एलिमेंट्स हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं और इसके थ्रू फिर से समझते हैं इसको, इस पूरे प्रोसेस को। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन कर लिया कि जो हमारा सोर्स है वो P है, इसकी डिस्टेंस को हमने 0 ले लिया और बाकी सबकी डिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दिया। नाउ इस P वर्टेक्स से जाने वाले सभी एजेस को हम देखते हैं, P से Q, P से S, P से T। P से Q की डिस्टेंस 1 हो गई क्योंकि हमने 0 + 1 किया। P से S 0 + 6 हुआ, इनफाइनाइट से छोटा है। P से T 0 + 7 7 हो गया, बाकी सब इनफाइनाइट रहे। इन सभी वर्टिसेस जिनको हमने अपडेट किया है इनके प्रेडिसेसर्स P होंगे क्योंकि हमने इनको अपडेट किया है। आफ्टर दिस वी विल डिलीट द मिनिमम वन इज दिस Q। सो Q से जाने वाले एजेस को देखिए, Q से S, Q की कॉस्ट हमारी है 1 + 4 इज 5, सो 6 को हम 5 से अपडेट कर सकते हैं। Q से R हम जा सकते हैं, इसकी कॉस्ट होगी 1 + 1 2, बाकी कोई अपडेशंस नहीं होंगे। Q और S के प्रेडिसेसर्स हम सेट करेंगे। Q और S के जो प्रेडिसेसर्स होंगे, सॉरी, ये जो हमने अपडेशन किया है वो S के लिए किया था, 5 एंड R के लिए अपडेशन है, दिस इज 2। सो R और S के जो प्रेडिसेसर्स होंगे वो Q सेट हो जाएंगे। ओके, एंड देन हमने क्या करना है, फिर से डिलीट करना है मिनिमम हम डिलीट करेंगे तो दिस 2 1 विल बी डिलीटेड। R से जाने वाला जो एज है वो S है, 2 + 2 4, अपडेट कर दीजिए। R से जाने वाला U है, एक 1, R के डिस्टेंस 2 है, 2 + 1 3 हो गया इसकी डिस्टेंस, ये इनफाइनाइट है। फिर से आप इन दोनों वर्टिसेस जिसको आपने अपडेट किया है इनके प्रेडिसेसर्स R सेट कर दीजिए, मिनिमम वाले को डिलीट कीजिए, U डिलीट होगा, U से जाने वाली H कोई नहीं है, कोई अपडेशन नहीं होगा। देन आप नेक्स्ट डिलीट करेंगे S को, S से कनेक्शन T का केवल हमें देखना है जो कि 3 है, सो 4 + 3 7 हो जाएगा और T का प्रेडिसेसर S सेट हो जाएगा। सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द सोर्स। सो सोर्स से Q की डिस्टेंस हो गई 1, सोर्स से S की डिस्टेंस हो गई फाइनली 4, सोर्स से T की डिस्टेंस हो गई 7, सोर्स से U की डिस्टेंस हो गई 3 और सोर्स से R की डिस्टेंस हो गई 2। सो ये हमारी फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ है। प्रेडिसेसर्स के थ्रू आप ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा पाथ हमने निकाला। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि डायस्टर्स एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। देयर आर 3 एप्लीकेशंस दैट यू कैन रिमेंबर। वन इज हाउ कैन वी फाइंड आउट the mapping of the stations, how can you find out the shortest path between the pair of the stations on the Google Maps or through the Google Map, and then routing process in the network। एक सोर्स से डेस्टिनेशन में आप डाटा भेज रहे हैं तो पैकेट्स को सेंड करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट किया जाएगा। एंड अनदर वन इज एपिडेमियोलॉजी, जिसमें कि हम ये फाइंड करते हैं कि कोई डिजीज़ किसी पॉपुलेशन में किस तरह से फैला। तो आपने भी कोरोना का या कोविड का आपने रीसेंट एग्जाम्पल देखा। थैंक यू।